चलो, so we done SN term, we found the formula, right? Formula याद है? बोलो, SN is, what is formula SN का? N by 2 into, N by 2 into a plus L no last term नहीं, normal है तो 2a 2a plus plus n minus 1 into d. into d. This is the formula we are using, right? And sometimes it will be useful for AN also we have to use, okay? And the other formula क्या है? N by 2 into a plus L. L is the last term, like nth term. If I know the nth term, directly use this formula, shortcut formula आ जाएगा, okay? चलो, क्वेश्चंस करो. Now it will be easy. You've done all the questions, right? Find the sum of all the 3-digit natural numbers which is divisible by 7. Write the series always and try to get the numbers. Sum चाहिए. So 3-digit number which is divisible by 7. First 3-digit number which is divisible by 7. वो check करो पहले. Like 100 से you can start. 100. So कौन सा नंबर आएगा? First, I think 105. No, add 7 7. And last also you find. कितना? 105 plus 7 is 112. 112 plus 7 is 119. So on. And last 3-digit number which is divisible by 7. So always if you can able to write the series, then it is easy to find. So last number check with 999, 998. Sir, 994. 994. Now you got right everything. Find the sum of all the digits ka, which is divisible by 7. But can we know? So sum के लिए आपको formula SN का formula will use, right? N by 2 into A plus L you can use, or A plus M minus 1 to D. Anything 2A plus N minus 1 to D. Okay. But we don't know N, right? That is the problem. So क्या करने वाला है? How to find N number? In the series में we know the last term, right? Last term is called nth term. Use that formula. AN का. So this is given. AN is given. Formula क्या है? A plus N minus 1 into D. So you know A, you know D, and AN also you know. Find N. 994 is equal to A is 105 plus N minus 1 into 7. So that's why sum of n terms में आपको AN भी use होगा. If I know the last term, AN also will help you to find N. आनो find करो कितना होगा? Sir, Hmm. is it 70,336? Yes. So 994 minus 105 by 7 is equal to n minus 1. So if you solve, कितना separate करो कितना होगा? 994 minus 100 means 884. 884 minus 5. 879 ना? कितना आकर्ष कितना है? Sir, N I value got कितना है? the हाँ? Sir, I got the 77. answer as 70336. 7033. हाँ. So the So it final is 894 minus 6. नॉर्मल करेंगे. 994 minus 1. 889, right? So 707. So 18, 714, 49, 7049. So n equal to 128, right? Now substitute in the formula in this. We'll get the sum. सबको कितना है?
कितना है श्रीनिधि, हाउ मच यू गॉट? Sir, I'm calculating. हाँ कैलकुलेट करो. आदि ऑन द वीडियो. विराज आपका इश्यू क्या चल रहा है? ऑन द वीडियो. आज का आपका आ गया आंसर? Sir, I got 70336. Yes, 7036. N equal to 128 आया. Just substitute in this formula. So here 128 by 2, that is 64 into A is 105 plus L is 994. So if you multiply, you will get as 70336. ओके. सो आपको an एंड sn दोनों हेल्पफुल होगा कभी भी. नहीं तो n नहीं मिलेगा. n किधर है, n किधर है बोलते लास्ट टाइम मालूम है ना, an यूज करके सॉल्व करो. चलो नेक्स्ट करो. फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 and 1000. बिटवीन मतलब 250 डोंट ऐड, 1000 डोंट ऐड, which is exactly divisible by 3. So you have to check which number is first divisible by 3. Always try to write the series. So 2 plus 5 7. आपको 9 आने के लिए 2 252, right? 252, then 255, so on. Last number below 1000 वाला divisible by 3 means 9 9 9. Now you got the series. Now solve करो. Sum of all natural numbers. Here also n we don't know. There is N 248. N is 248. 8. No, थोड़ा wrong है. 249. और भी ऐड करो. So 250. 250. हाँ. So an is 9. So an का formula a plus n minus 1 into d. So 999 is equal to a is 252 plus n minus 1 into d is 3. So 999 minus 252. 7 4 747. 747 divided by 3 is equal to n minus 1. So 14. So 306 1 7 1 4 14 3 4 12 3 9 27. So n equal to 50. Sir, तो वैल्यू हो गया the कितना है? answer 32,499. नो रॉन्ग. Sir, is it 156375? यस करेक्ट. इधर तक समझ में आया ना? n आ गया ना. यू सेलिंग सम ऑफ एडिशन करो बोल के बोल रहा है. सो यूज करो. कितना टर्म्स है? 250. सो s 250 यू डिफाइन. So n by 2 means 250 by 2 into a. Last time we know, right? Easy. A plus L. A is 252 plus 999. So 125. Now add karo, multiply karo. You'll get the answer as 156375. This answer. कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो. इधर क्या करेगा पीपल? यू आर मल्टीप्लाइंग. हासिनी, यू आर मल्टीप्लाइंग लाइक दिस. हासिका, यू आर मल्टीप्लाइंग लाइक दिस. हाँ, कभी भी ये मल्टीप्लाई मत करो. आपको क्या करने का, ये टर्म को इस तरफ लेके आओ. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, दिस इज इनटू, राइट? व्हेन यू सेंडिंग दिस साइड, इट विल बी डिवीजन.
बाई डिवाइड करने के बाद -1 उधर भेजो, प्लस हो जाएगा, नहीं तो ये मल्टीप्लाई किया तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. You got us, Srindhi? Yes, sir. On the video. चलो, हाँ नेक्स्ट करो. अभी चैलेंजिंग क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, वो 100% क्वेश्चन स्कूल में आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत फेमस है. The ratio of 11th term of an AP to the 18th term is 2:3. So A11 by A18 is equal to 2/3. Find the ratio of sum of the first 5 terms of to the, you're asking sum of 5 terms by sum of first 10 terms of an AB is how much? So मतलब Sir, ये but थोड़ा, we don't have A or D. हाँ मतलब ये दिया ना, इससे कुछ रिलेशनशिप आएगा, वो रिलेशनशिप इधर यूज करने का. फर्स्ट इसको एक्सपेंड करो, A11 मालूम है, A18 मालूम है, no need of A, no need of D. Yes, expand, go on, find some relationship between A and D में आएगा, find करो. So A10, A11 is A plus 10D by A plus N minus 1. So 17D is equal to 2/3. Now cross multiply. Sir, is the relationship A is equal to 4D? देखेंगे, आप लोग, आप करो, आंसर बोलो लास्ट में. हाँ दिया, ए आया. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, because this is given to you, some relationship लेके आने, then only you can I can solve this one, right? So 3A plus 3 into 10, 30D is equal to 2 into A is 2A plus 72 is 34D. So A is equal to 4D. So you got relationship. इससे कुछ we cannot solve, right? इधर तक last है. Now solve करो, इसको expand करो, इसको we expand. S5. Sir, is the answer 6/17? 6/17. 17. Okay, देखेंगे. So S5 by S10 I want. S5 by S10. Okay, n by 2. N by 2 is 5/2 into 2A plus n minus 1 into D by here 10/2 into 2A plus n minus 1 into D. Okay, so 2 to cancel, 1/2 आएगा. So 2A plus n minus 1 into D by 2 times of 2A plus, okay, n by 2. n is 10, right? So इधर कितना आएगा, इधर ऐड कर लो, हो जाएगा. n is 5, right? So 5 minus 1 4D, and इधर क्या आएगा, 10 है ना, n is 10, 9D. Now थोड़ा सॉल्व करने के बाद सब्स्टिट्यूट a के जगह में 4D, विल गेट द वैल्यू. सब्स्टिट्यूट करो and find the relationship. So 2A plus 4D by 4A plus 18D. Now A के जगह में 4D लगाओ. So कितना होगा, A के जगह में 4D, 4 into 2 8D, 8D plus 4D is 12D by A के जगह में 4D, 4 into 4 16, 16 plus this 34, right? 34D. So DD cancel, 2 6 is 12, 2 17 जा. So answer is 6/17. देखो इधर A पता नहीं है, D पता नहीं है, but he has given this condition. आपको सॉल्व करके some relationship लेके आओ and use that result in this expansion. Understood? Doubt किसी को? हाँ, understanding? Yeah. Bhavani, understanding? Huh? Yeah. Now next one will be challenging question. Without copying, sincerely करो. Who will do? We'll see. न्यू मॉडल है, एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार आएगा. ओके, चलो हो गया, कॉपी बेटा वाला.
दो करेगा? चलो देखते हैं, अंडरस्टैंड करो. In an AP, the sum of n terms is given as this much. So sum of n terms is given as 3n square by 2 plus 5n by 2. This is given to you. Find its 25th term. I want A25 is how much? कट आसिका, वो आंसर बोल रहा था.
I got 70. 70? 70. 70, yeah? No? Se- 76. Yeah, very good. Super. 76 is the answer. Very good. करो, सब लोग करो, देखते हैं. Anybody, come on. विराज, हो गया? आपको हो गया आदर्श? ओके, देखेंगे. Sum of n terms is given. How to get A25? A25 आने के लिए आपको सीरीज चाहिए. If you can get the series, then A25 फाइंड करना इजी है. बिकॉज ए डी अगर सीरीज आ गए तो ए डी मालूम हो जाएगा, एन मालूम है 25. तो सीरीज लेके आने के लिए देखो. आ गया, आ गया. कम ऑन, जल्दी. आया? एनीबॉडी? माने आया? ओके, आई टेल यू. देखो, इसका अंडरस्टैंड करो. देयर गिव सम फॉर्मूलाज वगैरह, वो फॉर्मूलाज वगैरह नहीं चाहिए. देखो, whenever they given sum of n terms, okay, if I substitute n equal 1, tell me s1 is how much? n equal 1 लगाओ. So 3 into 1 by 2, 3 by 2, plus 5 into 1 by 2 is 5 by 2. So कितना होगा? 8 by 2, 8 by 2 is 4. S1 is 4. Similarly, S2 फाइंड करो. मतलब n के जगह में 2 सब्स्ट करो. So 4, 12 by 2 is 6, plus 10 by 2 is 5. So it is 11. Now with this 2, we can write the series also. देखो, S1, what is meaning of S1 means sum of first term. मतलब this is A only, right? Sum of first term is A only. So 4, comma. Can you tell me the second term?
What is S2 means? Sum of first two terms is 11. So can you tell me second term will be how much? Sum of first two terms is 11. Second term will be कितना होगा? Anybody? 7. समझ में आ रहा है विराज? S2 मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स मिलके 11 आएगा. सो फ्रॉम दिस आपको सेकंड टर्म आने के लिए सेपरेट करने को 11 minus 4 is 7. So on. You got the series now. A value no 4, D value no 3, and N is 25. So now A25 find karo. A25 is A plus A is 4 plus N minus 1. 25 minus 1 is 24 into 3. So it is 12, 6, 72 plus 4. That is 76. The answer. Okay. Sum of n terms is given. You just substitute 1, 2. 2 सब्सिट्यूट करने से क्या है मीनिंग क्या है सम ऑफ टू टर्म्स इज 11 सो आपको सेकंड टर्म विल गेट एज 7 दैट इज इंपॉर्टेंट सो ऑलवेज व्हेनेवर क्वेश्चन इज देयर यू ट्राई टू गेट द सीरीज आ गए तो इट इज इजी understood all of them next copy da copy da चलो no Sir, it should be like S2 minus S1, right? Not S1 minus S2. ऑलवेज बड़ा मैंने सम ऑफ टू टर्म्स में सेकंड टर्म टोटल दो टर्म मिलके 11 राइट सो S2 minus S1 ओके 11 minus 4 करने का ऑलवेज याद रखो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ये बार बार क्वेश्चंस में भी आएगा ओके चलो हाँ ये करो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी डन ऑलरेडी इन an का so mth term is 1 by m so mth term is 1 by m means am is equal to this is if the mth term is only okay am is 1 by n the given nth term is 1 by n nth term is 1 by m he is telling mth term is half sum of so that question method so that sum of mnth term is sum of its mn so smn is how much he is telling to prove that it is half times of mn plus 1 ये प्रूव करने का सो आपको ये मालूम है आपको ये एक्सपेंड करके ए एंड डी विल गेट ए वैल्यू रिमेंबर है ए वैल्यू डी वैल्यू कितना आएगा बोल के याद है दोनों सेम आएगा बोल के बोला उस टाइम ए वैल्यू कितना आएगा डी वैल्यू का सॉल्व करो एक्सपेंड करो sum of mn means mn by 2 into 2a plus mn minus 1 into d right so आपको इधर से a and d आएगा then substitute you'll get the answer am को एक्सपेंड किया तो a plus m minus 1 into d is equal to 1 by n similarly a n expand किया तो n minus 1 into d is equal to 1 by m okay now subtract by elimination method so plus will become minus 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 so a cancel अगर मैं d कॉमन लूंगा m minus 1 minus n minus of minus plus 1 is equal to 1 by n minus 1 by m so minus 1 plus 1 cancel d into m minus n is equal to m minus n by mn so m minus n minus cancel d is equal to 1 by mn now substitute d value in any one equation find a
Sir, A is -1 by mn, right? No, A and D value always will be same आएगा. Substitute D value in this. A plus m minus 1 into D के जगह में 1 by mn is equal to 1 by n, right? So A plus m into 1 by mn is cancel 1 by n minus 1 by mn is equal to 1 by n. So n 1 by n cancel. A is equal to minus 1 by n को if you send this side 1 by mn. खत्म. A and D आ गया. Now substitute. Always याद रखो A model में A and D values same. Famous questions this all. So A value is 1 by mn, D also 1 by mn. Now substitute SMN. Now solve करो. What is the formula SMN means? Mn by 2 into 2A plus n के जगह में mn minus 1 into D. Now A value, D value substitute करो इसमें and find the value. A and D value substitute करो in some mn, and whether we are getting the same thing or not, we check. Sir, once can you explain how did you get m minus 1 as 1 by n? N minus 1 as 1 by n now. So m minus 1 as 1 by n, you substituted. A value D value आया इधर तक. I got the d value, sir. D value आया ना. You substitute in the first equation में. देखो A plus m minus 1 इन D के जगह में क्या है 1 by mn. ओके इधर तक आया, ये समझ में आया, इक्वल 1 by n. D के जगह में substitute 1 by m. ओके now m multiply करो. m into 1 by m 1 by mn is how much? m into 1 by mn. So mm cancel कितना आएगा 1 by n. समझ में आ रहा है? This Yes. इसका मीनिंग क्या है? This one should be multiplied for both, right? So this is multiplied for this one, this is multiplied for this one. So m into 1 by mn is 1 by n, and minus 1 into 1 by mn is minus 1 by mn. So 1 by n cancel, minus 1 by m को if you send this side 1 by mn. Okay, sir. Now substitute करो, इसमें कितना आएगा? mn by 2 into 2 by mn. A के जगह में substitute कर रहा हूँ, plus mn minus 1 into 1 by mn. So mn by 2 into 2 by mn plus mn by mn is 1 minus 1 by mn. So 2 by mn minus 1 by mn is 1 by mn. So क्या बचेगा? mn by 2 into 1 by mn plus 1 by 2. Okay. So इधर भी मैं क्या करूँगा, mn कुछ गलत किया, mn by 2 into 2 by mn plus, so 1 minus 1 by mn, 1 by mn plus 1. Okay, 1 by mn plus 1, right? Not 1 by 2. Right, इधर 1 बचा है ना, 1 आया. हाँ, नो कितना है? नो इधर आपको 1 by 2 mn को अंदर भेजो. 1 by 2 into हाँ mn by mn को दोनों मल्टीप्लाई करो. mn by mn is 1 plus mn plus 1 is mn. देखो half into mn plus 1. देखो half into mn plus 1. We proved. आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करके a and d आने के बाद he is telling to find smn. Prove that smn को एक्सपेंड करके सिंपली आई सब्स्टिट्यूट a के जगह में 1 by mn, d के जगह में 1 by mn, and if you multiply you will get this one. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस आर देयर, हो जाएगा. ओके, understood till here? Doubt anybody? Viraj.
समझ में आया पहला? यस। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, करो। हाँ, ये करो। फिर एक्सपेंशन, पेशेंस रहने का। Sum of n terms, 2n terms and 3n terms of an AP are S1, S2, S3. He's trying to prove this one S3 is equal to sometimes this one. Okay. What is S1 is sum of n terms. Sum of n terms. So what is the formula? N by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is S1. The given, right? S1 is the sum of n terms. Okay. Now S2 is sum of 2n terms. So n के जगह में 2n लगाने का. So n के जगह में 2n terms लगाने का. So 2n by 2 into 2a plus 2n minus 1 into d. Similarly, S3 is sum of 3n terms. 3n by 2 into 2a plus 3n minus 1 into d. So you got S1, S2, S3. आपको क्या करने का? You take RHS and you do this calculation and will get S3. Okay. So RHS क्या है? Right hand side. 3 times of S2 minus S1 find करेंगे. Because S2 also you know, S1 also you know. Substituting after solving maybe S3 आएगा. We'll prove. Okay. 3 times of S2 is बड़ा वाला 2n by 2 into 2a plus 2n minus 1 into d. This is S2 minus S1. S1 is minus n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Right? S2 minus S1, I substituted S2 value and S1 value. Okay. थोड़ा आराम से solve करो. So 3 into, you can take n by 2 common. कॉमन लूंगा. सो क्या होगा? सो 2. ओके, 2 बचेगा. सो 2 को मल्टीप्लाई करो. हाँ, सो कितना होगा? सी n by 2 आई एम टेकिंग कॉमन. सो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा टोटली. सो 4a प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 इंटू डी. ओके, ये n by 2 बाहर लिया. माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी. क्लियर शुड? नाउ सिंपली कैलकुलेशन करने का, दैट्स इट. आपको पूरा मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व किया तो विल गेट S3. दैट ओनली वी हैव टू प्रूव S3 इक्वल. ओके, करो, सॉल्व करो इधर. यू एक्सपैंड दिस वन एंड कैंसिल. देखो 3n by 2 तो आ गया. 3n by 2 ऐसे रहने दो. 3n by 2 इसको सॉल्व करो, हो जाएगा. तो 3 टाइम्स ऑफ n by 2, that is 3n by 2. I can write like this. This n by 2 is for total, right? So 3n by 2. 3n by 2 into 4a plus 2 into 2, 4n minus 2d. Okay. So minus 2a, minus 2a, minus another minus nd and plus d. राइट, कुछ है. हाँ, इधर डी भी मल्टीप्लाई नहीं किया ना. सो 4nd, दिस इज 4nd एंड माइनस 2d, माइनस 2d, राइट. हाँ, एंड डी नाउ करो. सो 3n by 2 into 4a minus 2a is 2a plus 4nd minus nd, 3nd minus 2d plus d is minus d. Okay. 3n by 2 into 2a plus d कॉमन लिया तो 3n minus 1. So 3n by 2 into 2a plus 3n minus 1 into d you got, right? So this is nothing but a total term is nothing but S3 only. This is only S3. We proved. So एक बार दो बार प्रैक्टिस करने का ये वाला, so that आपको माइनस प्लस में टेढ़ा नहीं आएगा.
always keep brackets lago, wherever minus comes, keep bracket properly, you will never do mistake. अगर थोड़ा भी कॉमन नहीं लेके देखो, दिस माइनस पीपल क्या करेगा, दिस माइनस दे विल मल्टीप्लाई फॉर ओनली फॉर फर्स्ट टर्म, रॉन्ग हो जाएगा. ये दोनों मल्टीप्लाई करने के, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आराम से. एंड हियर आल्सो माइनस शुड बी मल्टीप्लाइड बोथ, तो ऑलवेज कीप ब्रैकेट्स में माइनस वाला. सम ऑफ n टर्म्स में 3-4 प्रॉब्लम्स आर देयर, एंड an में 3-4 प्रॉब्लम्स आर देयर फॉर लाइक बड़ा प्रॉब्लम्स. नॉर्मल तो आता है फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के n a d फाइंड करना, दैट इज इजी. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली एग्जाम में आएगा. कॉपीडा श्रीनिधि अंडरस्टूड. Yes. आद्या Yes, sir. वो काम में बैठ रहे ऑफ करके, वीडियो ऑफ करके सुनो अच्छे से. थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम से अंडरस्टैंड करो, थोड़ा पेशेंस से करना पड़ेगा. चलो नो करो, लास्ट क्वेश्चन. हाय करो, लास्ट क्वेश्चन. Sir, हाँ टेल मी. sir, all 5 chapters test is on Monday or Friday? No, Friday only NCERT test I'm taking. Kanisam this time I want all persons to get full marks. Okay, NCERT is easy, right? So so proper way में all models देखो. Quadratic equation majorly people will do mistake. मैं examples भी दूंगा, anything पूरा check करो, each and every model check करो. Hard question उसमें से जो hard लगा वही दूंगा, easy नहीं दूंगा. Okay, चलो. The ratio of sum of m and n terms are this much. So Sm by Sn, they given as m square by n square. He is telling the ratio of mth and nth term to prove. He is telling to find am by an is 2m minus 1 by 2n minus 1. We have to prove that. Since only one given condition is there, आपको एक्सपेंड करके सॉल्व करके पूरा सम रिलेशनशिप आने के बाद यू हैव टू एक्सपेंड दिस वन, देन ए एंड डी में रिलेशनशिप आएगा. इधर सॉल्व करो, एक्सपेंड करके फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी. फॉर्मूला यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैंसिल करो, पूरा मल्टीप्लाई करके एक जगह में लेके आके टेल ए एंड डी रिलेशनशिप. एस एम का एक्सपेंशन क्या होगा, m by 2 into 2a plus m minus 1 into d by Sn is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to m square by n square. देखो ये 2 कैंसिल, इधर एक m, इधर एक m कैंसिल, इधर एक n, इधर एक n कैंसिल. सो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, n टाइम्स ऑफ 2a plus n minus 1 in m minus 1 into d plus is equal to this. Also I'm multiplying m times of 2a plus n minus 1 into d. इधर तक अंडरस्टूड. सिंपली दिस इज ओनली वन इक्वेशन, राइट. आपको कुछ नहीं सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए एंड डी रिलेशनशिप लेके आने का. अनो मल्टीप्लाई, टोटल मल्टीप्लाई एंड ब्रिंग ऑल वन साइड एंड टेल द आंसर. देखो n should be multiplied for both, right? So 2an plus md into n is m and d minus d into minus nd, right? Is equal to इधर क्या आएगा, 2am plus mn into d minus dm is minus md. Okay, bring all one side. So 2a कॉमन ले रहा हूं, n minus m plus मतलब I brought this to this side, माइनस आएगा ना, माइनस m. नेक्स्ट m and d, प्लस m and d, प्लस m and d कैंसिल, एंड आई एम ब्रिंगिंग टू द अदर साइड इज इक्वल टू, उस सब क्या आएगा, d कॉमन लिया तो n माइनस m आएगा ना. देखो माइनस n इफ यू सेंड दिस साइड प्लस m, राइट, प्लस n माइनस m. नाउ देखो n माइनस m कैंसिल, सो देयरफॉर d इज इक्वल टू a. वी गॉट द रिलेशनशिप, a एंड d में रिलेशनशिप आया. इज द अंडरस्टूड? हाँ.
नाउ ए एम बाई ए एन करो, खत्म हो जाएगा। ए एम का एक्सपेंशन का ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बाई ए एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, सो ए के जगह में डी के जगह में सब्स करेंगे 2a बोल के। सो ए प्लस एम माइनस वन इंटू 2a बाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू 2a। नाउ मल्टीप्लाई एंड वी टू गेट दिस आंसर। मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, a प्लस 2am minus 2a by here a plus 2an minus 2a. So a minus 2a is minus a, right? A, right? Minus a. So 2am minus a by either be 2an minus 2a plus a is minus a. So a common ले लो, a ऊपर ले लो common, 2m minus 1 by नीचे भी a ले लो common, 2n minus 1. So a cancel, therefore we got the answer 2m minus 1 by 2n minus 1. इसको कुछ याद बाहर करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रिंग ऑल वन साइड, वी गॉट द रिलेशनशिप, जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला एंड मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर। देखने में बड़ा लगेगा बट 2-3 टाइम्स करने वाला है एंड पेपर्स में बार बार आएगा, एग्जाम्स में इजी हो जाएगा, लास्ट तक आपको बहुत इजी हो जाएगा। सो दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, कंप्लीट चैप्टर डन सक्सेसफुली, 5 chapters we finished, and holidays mein we'll try to do one more chapter also, I think, because chemistry also is there. Next week we are doing chemistry, we'll try to do more chemistry next week.